Hello everyone. Today we are going to learn about The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. So basically, The Portrait of a Lady is a part of an autobiography by Khushwant Singh. In this story, the author draws a pen portrait of his grandmother. He beautifully unfolds their relationship and how it undergoes several changes. So basically, the story is a loving tribute from a grandson to his grandmother. In this chapter, we are going to learn about the author remembers his grandmother and grandfather, the author's grandmother, because she is the main character of this chapter, how his childhood was with his grandmother, the childhood and his school life, and what was the turning point in the relationship of grandmother and the author, and how she was distressed and disturbed when the author, Khushwant Singh, moved to another place for higher studies. So basically, these are the things we are going to understand in this chapter. So here we go. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games that she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. So basically, in this paragraph, we are conveying the things about the grandmother, how the grandmother was like everybody's grandmother, and she was old and she had a wrinkled face for like 20 years. She had looked like the same person for 20 years. Okay, so basically, there was a time when people used to say that she was young and pretty and even had a husband. And it was hard to believe for that grandson, Khushwant Singh, because grandfather's portrait was hung above the mantelpiece in the drawing room, like everybody's drawing room. We had our ancestors' portraits hung over there. So he wore a big turban. Now, here's the description between this line here. He wore a big turban and a loose fitting clothes. So this is the description of the portrait which was hung over the mantelpiece in the drawing room. Please mark this line. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. So the basically a child is describing about his grandfather, and the portrait, and basically the portrait and his personality was described in these lines, that he had a white beard which was that much long that it was covering his chest, the best part of his chest, and he was looked like 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. And as compared to that grandmother, she was being young and pretty. This thought was almost revolting, that it was unbelievable for that children. She often told us of the games she used to play as a child. We must have heard of it, as our ancestor told us about the stories of their childhood and how they people used to, play games over there. So here it is. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated her like the fables of the prophets she used to tell us. So basically, in this last second line, we are discussing about how it was absurd, hard to believe the thoughts and the childhood memories which was described by his grandmother. And he is saying that it is hard to believe, it is undignified, and it is like fables of the prophets. She used to tell us, like she used to tell the stories of the prophets and the God figures. So it was like that. She had always been short and fat and slightly bent. Now, in this line of the second paragraph, the first line,
Here he is describing the personality of the grandmother. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. So basically, first of all, he described her height, then his figure, then the posture of the grandmother, which was slightly bent. Then again, he was again on her face, and he's describing about his wrinkles. No, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. Now, in this line, he is describing about her grandmother that she is like old, very old, and she had been like this for like 20 years and she hasn't even changed a bit. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She could not have ever been pretty, but she is beautiful. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. In this line, this author is describing about how she is used to move in the whole house, and in one hand she has that one rosary, that beads of that, what we call in Hindi is like mala, and she used to chant all the prayers by by moving that beads, and then the second hand she is like holding her waist. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. As I told you before, she was, chanting an inaudible prayers while moving from one place to another. And now again, he is describing about her personality. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face. And now again, the description is here. Puckered face. You can use this simple two words in your answer, pale and puckered face, and her lips were constantly moving. Yes, she was beautiful. Now he is claiming that she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. Like she was like winter landscape in the mountains. The description is here about like metaphor. He's using mountains and describing her grandmother's beauty. My grandmother and I were good friends. Now he is describing about the relationship in the first line of third para. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. The author's parent left author ठीक है, with her with his grandmother, and they left for the city. She used to wake me up in the morning and get me ready for the school. Now her his grandmother is doing all the chores of his. She said her mother prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Now, while bathing, the Kushwan Singh, the author, his grandmother used to chant some prayers, ठीक है, after dressing him up, and she would hope that he would listen and learn by heart, but he never did. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthening pot, and a red pen, tie them with all in a bundle, and hand it to me. After a breakfast of thick, stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑथर है उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया है उसकी दादी माँ के साथ में, ठीक है, और वो लोग सिटी में रहने चले गए हैं। अब यहाँ पर उसकी जो दादी है उसे रोज सुबह उठाती हैं और रेडी करती हैं स्कूल के लिए, और जब वो ये चीज कर रही होती है तो वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स जो है, मंत्र जो है वो चलते रहते हैं उनके, ठीक है, और वो उसको नहला भी रही हैं तभी वो मंत्र उच्चारण कर रही हैं, उसके बाद में उसको कपड़े पहना रही हैं तब भी कर रही हैं, और वो उम्मीद कर रही हैं कि वो ये सब सुनेगा और फिर उसे बाय हार्ट ये चीजें याद हो जाएंगी। अब यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, कि मैं उनकी आवाज तो सुनता था क्योंकि मुझे उनको अच्छा लगता था सुनना, उनकी आवाज अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी भी इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं उन चीजों को याद करूं। देन फिर उसके बाद में वो अब उसकी लकड़ी की जो स्लेट है उसको पहले ही धो करके प्लास्टर करके येलो चॉक से रेडी रखती हैं,
ठीक है, एक जो अर्दन इंक पॉट है उसको रेडी रखती हैं, एक रेड पेन जो है उसको रेडी करती हैं, सारा सबका बंडल बना करके इसको दे देती हैं। और ब्रेकफास्ट में इसको एक मोटी स्टेल चपाती खिलाती हैं बटर के साथ में और शुगर के साथ में। फिर उसके बाद ये स्कूल के लिए निकल जाते हैं और वो वहां से वो स्टेल चपातीज जो बच गई हैं वो गली के कुत्ते जो होते हैं, विलेज के जो कुत्ते हैं बेसिकली गांव के, उनके लिए ले जाती हैं। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब ग्रैंडमदर जो है वो इसके साथ में स्कूल जाती थी रोज, क्यों? क्योंकि जो उसका स्कूल था वो एक मंदिर से जुड़ा हुआ था। द priest taught us the alphabet and the morning prayer. वहां पे जो पुजारी था वो इन्हें अल्फाबेट्स वगैरह सिखाता था और साथ में मॉर्निंग प्रेयर करवाता था। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. अब जब बच्चे वहां पर बैठ करके बरामदे के अंदर अल्फाबेट्स गा गा करके सीख रहे होते थे, प्रेयर्स गा रहे होते थे, कोरस यानी कि साथ में मिलके, जो ग्रैंड मदर थी वो अंदर की तरफ बैठ जाती थी और अपने स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ती रहती थी। व्हेन वी व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। जब दोनों खत्म हो जाती थी, दोनों की अपनी अपनी उनकी प्रेयर्स खत्म हो जाती थी, जो स्क्रिप्चर्स वो पढ़ रही थी वो खत्म हो जाती थी, और जो बच्चे अल्फाबेट सीख रहे थे वो जब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती थी तो दोनों साथ में निकल पड़ते थे वापस घर के लिए। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेंपल डोर। इस समय क्या होता था, जो गली के या जो गांव के जितने भी कुत्ते हुआ करते थे वो वहां पर उनको टेंपल के दरवाजे पर मिल जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other to their chapatis we threw to them. यहाँ पर वो उनको फॉलो करते जाते थे, जैसे कि घुर्राते हुए लड़ते हुए आपस में, और उनको ये चपाती देते हुए जाते थे। When my parents were completely settled in the city, they sent for us. जब इसके पेरेंट्स अच्छे से सेटल हो गए सिटी के अंदर, तब उन्होंने इनको अपने पास बुला लिया। That was a turning point in our friendship. इस लाइन को आप मार्क कर सकते हैं कि वो एक जो समय था वो एक टर्निंग पॉइंट था इनकी फ्रेंडशिप के अंदर, ग्रैंडमदर और उनके पोते के बीच में। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to the school with me. भले ही ये यहाँ पर अब शहर जब पहुंच गए हैं तो वहां पर एक ही कमरे में है, लेकिन अब वो उसको स्कूल छोड़ने नहीं जाती है, ना ही उसके साथ में आती है। I used to go to an English school in a motor bus. अब ये वहाँ पर एक इंग्लिश स्कूल में जा रहा है जो वहाँ पर ये बस से ट्रैवल करता है। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. वहाँ पर अब गली के कुत्ते नहीं हैं और ये जो है अब स्पैरोज को, यानी कि जो चिड़िया है आ जाती हैं बरामदे में सिटी हाउस के, वहां पर उनको दाना डालती हैं। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीत रहे हैं वैसे वैसे हमारा कम्युनिकेशन या हम एक दूसरे से कम बातचीत कर रहे हैं। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे उठाया, सुबह उठाती रही और तैयार करती थी स्कूल के लिए। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से आता था तो वो मुझे पूछती थी कि हमें स्कूल में क्या सिखाया, टीचर ने हमें क्या समझाया। I would tell her English words and little things of the Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. और मैं उन्हें बताया करता था कि अंग्रेजी के शब्द मैंने सीखे, जो नई चीजें मैंने सीखी वेस्टर्न साइंस के बारे में, और लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सीखा कि दुनिया के आसपास क्या चीजें हैं, दुनिया गोल है, ये सारी चीजें मैं उनको बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सब जान करके वो काफी अनहैप्पी हो जाती थी, यानी कि दुखी हो जाती थी, उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी। She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो बेसिकली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी कि वो, पहली बात तो ये कि वो मेरे को अपने लेसन्स के साथ में मदद नहीं कर पाती थी, कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में था और उनको ये विश्वास नहीं होता था कि हमें अंग्रेजी मीडियम स्कूल में क्या क्या चीजें सिखाई जा रही हैं, और वहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करवाई जा रही भगवान के बारे में या स्क्रिप्चर्स के बारे में, जैसे कि वहाँ विलेज स्कूल में कराई जाती थी। वन डे आई announced that we were being given music lessons, और एक दिन मैंने उनको बताया कि अब हमें म्यूजिक लेसन्स जो है वो दिए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुनकर के वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक had lewd associations, क्योंकि उनका मानना था कि ये गाना बजाना वगैरह जो चीजें हैं ये थोड़ी सी खराब चीजों से एसोसिएट की जाती हैं, यानी जोड़ के देखी जाती हैं। इट वॉज अ monopoly of harlots and the beggars and not meant for gentle folk, और उनका मानना ये था कि ये गाने बजाने वाली चीजें जो होती हैं ये भिखारियों के लिए होती हैं, या जो इधर उधर जाकर के गाना बजा करके स्टोरी सुनाते हैं उनके लिए होती हैं बेसिकली।
जो गलत काम कर मतलब एक तरीके से जो एक सभ्य नहीं होते हैं उनकी बात होती है ये। ठीक है, ये जेंटल कुक के लिए नहीं है, ऐसे कि सभ्य लोगों के लिए ये चीज सही नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनका जो चुप्पी थी, वो चुप जो हो गई थी, उससे उन्होंने ये जाहिर कर दिया था कि वो इस चीज से खुश नहीं है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही कम इससे बातचीत करी। सो बेसिकली हमने अभी तक, हाँ, इस पैराग्राफ तक कंप्लीट किया है, जहाँ पे ये इन्होंने वापस से बताया है कि किस तरीके से इनका रिलेशनशिप रहा। शुरुआत में इन्होंने बताया कि ग्रैंडमदर, हर पहले उनका डिस्क्रिप्शन दिया कि हर एक ग्रैंडमदर के जैसे जैसे हर एक दादी माँ होती है, वैसे ही उनका भी स्ट्रक्चर है, रहा है उस समय पे। वो भी ओल्ड वुमेन है, चेहरे पे उनके ऐसा लगता है कि 20 साल से इसी तरह की उनकी शक्ल रही है, झुर्रियों वाली। और ये भी बताया जाता है कि कैसे लोग उनको बोला करते थे कि एक समय वो काफी प्रिटी हुआ करती थी। उनका एक हस्बैंड भी थे, हस्बैंड की फोटो जो है वो टंगी हुई है ड्राइंग रूम में। फिर उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो किस तरीके से बड़ी सी टर्बन पहना करते थे, एज इन की उनकी बड़ी सी पगड़ी हुआ करती थी, ढीले ढाले कपड़े हुआ करते थे, उनकी काफी लंबी दाढ़ी हुआ करती थी। और ऐसा लग रहा था वो फोटो देख करके वो करीब 100 साल के तो रहे होंगे। और ऐसा नहीं लगता था शक्ल देख करके उनकी कि उनकी कभी कोई वाइफ या बच्चे रहे होंगे, सीधे उनके कई सारे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे। ये एक बच्चे की तरह के थॉट्स हैं, जो एक ग्रैंड चाइल्ड जो है वो अपने थॉट्स यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद में हमने उनके ग्रैंड मदर के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि वो शॉर्ट फैट और स्लाइटली बेंट थी, और उनके चेहरे पे किस तरीके से क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे, उनकी दिनचर्या क्या थी, ठीक है, किस तरह की वो चीजें करती थी, और इसको कैसे तैयार करती थी। वो सारी चीजें हमने यहाँ तक पढ़ ली है। तो हमने पेज 5 तक पढ़ लिया है, और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। टिल देन, reread this chapter and collect up all of your problems. Okay?